Okay, Ji, is the slide visible to you? Yes, sir. Okay, Ji. So we start our today's lecture, and our today's lecture is about. We are in the sixth week now, and we have learned about the Danawitt-Hartenberg parameters, which are called DH parameters. We had learned about those. So today, what we are going to do is to use those tables which we had made, the DH table which we had made. So today we are going to learn to convert that table into a transformation matrix. So our today's um, lecture would be about converting of DH table into transformation matrix. So this is what we are going to do today. We are going to learn today, and then we are going to apply this conversion onto two industrial robots. And those robots are the industrial robots which are being used in the industry. So we are going to calculate the transformation matrices for these two industrial robots. So let us start our today's lecture with first is the derivation of the link transformation. So we are going to derive a formula. We are going to derive a formula in terms of a transformation matrix, which actually is going to give us the conversion from DH table into transformation matrix. So the figure or the diagram which you see at the moment on your screen is not new for you. We have already talked about this diagram in which we had a link which is called link I plus 1, I minus 1, and it had two joints on its both ends. One joint is related to axis I minus 1, and the other one is related to axis I. So we had already discussed this. We had talked about the link twist in between, which is called alpha I minus 1. We have talked about the link length, which is AI minus 1. And we have also talked about link offset, which is DI minus 1. So we have actually, using these parameters, we have actually come out with the DH table. So today I'm going to show you that how that DH table is going to be converted into a transformation matrix. So what I have included here new in this diagram are these frames. So we have a P frame here, which is only the ZP is shown here, and here we have XP. So we have actually included a frame with the name P. So let me just write it down here. So we have included a frame P here, which is XP and ZP. So you can see it here. Then we have also introduced a frame Q. Its ZQ and XQ can be seen here. So we have included a frame Q as well in this. And then we have also introduced a frame which is R, ZR, and this is XR. So we have included a frame R here. So what is the use of these
these frames, we will just look at those one by one, and then we will see that how are we going to use these frames, which are P, Q, and R, to derive the link transformation from DH table into a transformation matrix. So if I just see, for example, if okay, for these frames we have only shown here X and Z, all the frames. We have not included Y here because Y is not being used in these transformations. So to reduce the cluttering, we have only used X and Z axis of these frames. All right, so let us first see that what do we have with us here. So let me just take the red color from here, and so let us see if I see the frame R. So let me just see frame R. So the frame R differs from frame R. This is frame R. This differs from frame I minus 1, which is, this is Z minus 1 and this is X minus 1, and it differs in terms of a rotation, which is alpha A minus 1. So let me just write it down here. So I may say that R differ from I minus 1 by a rotation of alpha I minus 1. Okay, now let us come on to the frame Q. So we have frame Q here, which I had marked in magenta in color. So this Q differs from R. So this Q, ZQ and XQ, this frame Q differs from frame R in terms of a translation which is given by A minus 1. I repeat, the frame Q differs from frame R in terms of a translation which is A minus 1. So let me just write it down here. So I may write down for Q, I can write down that Q differ from R by a translation AI minus 1. So this is the second parameter which we have identified while dealing with these new frames. And now let's see what about frame P. So about frame P, here we have frame P, which is marked in green. So frame P differs from frame Q by a rotation theta I. So let me just write it down here that for P, I have that P differ from Q by a rotation theta I. So now if I have all these rotations and translations in which there are two frames xi minus 1 and xi on two extremes, and we have introduced three frames in between which can give us a transformation from I minus 1 to I. So let's see. Now if I have a vector which is if I have a vector which is defined in I, so let me just write it down. So if I have a vector
So if I want to define a vector, अच्छा वेक्टर को हम p का ही नाम देंगे क्योंकि हम इससे पहले p ही बात करते आए हैं. If I to define a vector p which is known to me, which is known in frame I, so let me just put this in. So I can define a vector p which is known in I in frame I minus 1. So if I have an end effector in frame or in axis I, if I have an end effector here, so I can define this end effector in terms of I minus 1. So what would be our equation? What our equation would become if I write it down here. So I may know P in I minus 1. This will be equal to the transformation R with respect to I minus 1. अब मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ into this equation. Multiplied by the transformation of Q with respect to R, then multiplied by the transformation of P with respect to Q, P with respect to Q, and then the transformation of I in P multiplied by the vector P. And this is actually the vector P is given in I like this. So now I may say this, that since we have already known this, that this can cancel out like this. So in the end, we are left with P in I minus 1. So ये देखिए ये I minus 1 यहाँ आ गया और ये P यहाँ पे आ गया. So this is how I can now know my P, a vector P, which was known to me in I, frame I. Now I know it in frame I minus 1. ठीक है. सो इसी इक्वेशन को मैं किस तरह और लिख सकता हूं? इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, ये सारा जो है ये तमाम का तमाम यहां तक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन I to I minus 1. So I can write down my equation in this form, which is P I minus 1 is equal to T from I to I minus 1 into P I. So I can write down my equation like this. And I minus 1 is actually the transformation which includes this transformation. I to I minus 1 is something which includes the rotation between R and I minus 1. Then this is the transformation which is this is actually the Q and R. Between Q and R, this is the translation between Q and R, and then between P and Q, this is the offset, and between P and I, this is the rotation di, theta I and di. So let me just write it down here. So I can write down that T transformation I to I minus 1 can be given by, number 1, R and I minus 1. So we had decided that R different from I minus 1 by a rotation. So I can, and this rotation is about x-axis. So I can write down that this is R
rotation about x by an angle alpha I minus 1. ये बात समझ आई है कि ये मैंने कैसे लिखा है? किसी को यहाँ पे कोई क्यूरी तो नहीं है? दिस इज रोटेशन अबाउट, सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दो, ओके। सो ये जो है, जो मैं ये वाली चीज जो कि r और i माइनस 1 के दरमियान एक रिलेशनशिप है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन of r with respect to I minus 1. This is actually a rotation. This is actually a rotation of frame r with respect to frame I minus 1. And this is the rotation, this rotation is given by an angle alpha I minus 1, and this is carried out around x. So I have just written down this is rotation about x by an angle alpha I minus 1. जी, ये बात ठीक है? ठीक ठीक है सर। अब अगला देखेंगे। अब देयर इज अ ट्रांसलेशन बिटवीन Q एंड R, और ये किसके अलोंग है? ये भी x के अलोंग है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। मैं वही नोटेशन यूज करने लगा हूं जो आपकी बुक में गिवन है, तो इसलिए मैं नोटेशन को चेंज नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अराउंड x by a distance ai minus 1. ठीक हो गया? Okay, now let's move forward and see कि इससे अगला क्या था? This was between P and Q by rotation, by difference was a rotation theta I between P and Q, and it is about z axis. So let me just write it down. So this is a rotation about z by an angle theta I. ठीक हो गया? और मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूं ऐसे, एंड आई राइट डाउन द थर्ड। जो लास्ट है, लास्ट क्या है कि z की डायरेक्शन में देयर इज एन ऑफसेट ऑफ di. So there is a translation in z direction by an amount di. अच्छा जी, अब यहां तक कोई किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैंने ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखी, विच इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वेक्टर p which is known to me in I, and I have translated into I minus 1. और ये जो I और I के दरमियान, I और I minus 1 के दरमियान जो हमने तीन ऐड किए थे फ्रेम्स, उन फ्रेम्स का हमने एक आपस का रिलेशन जो है वो अपनी लास्ट इक्वेशन जो इस वक्त आपको नजर आ रही है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं इन तमाम रोटेशंस और ट्रांसलेशंस को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिखूं, so let me just write them down. So I can write down that the first rotation, which is r अल्फा, अच्छा मैं इसको यहीं पे ऐसे करके ना इक्वल टू करके तो मैं ये मैट्रिक्स लिखता हूँ। ये मैं पहला मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ, विच इज रोटेशन अबाउट एक्स बाय एन एंगल अल्फा आई माइनस 1. So I know that this is the rotation which can be written in terms of x. So this is cos alpha I minus 1 minus sin alpha I minus 1. अच्छा मैं इसको जरा जीरोस को इनके साथ ही ले जाऊं। सो एक जीरो यहाँ आएगा, एक जीरो यहाँ आएगा, देन यहाँ पे जीरो है मेरे पास, देन मेरे पास होता है साइन
alpha I minus 1 or cos alpha I minus 1 0 0 0. Since there is no translation here, so this could be 0 0 0 and 1. तो ये मेरे पास ये पहला मैट्रिक्स आ गया. Next is the of translation in x-axis by an angle sorry, the translation in x-axis by a distance ai minus 1. So let me just take this away for a while. Sorry. Okay, let me just take it away for a while so that uh, I may write it down here. So the next matrix would be, since I know that it is only a translation about x, so it means in rotation matrix, what would I have in the rotation matrix? If it is only translation, so what would I have in the 0. rotation matrix? G. Sir, identity matrix. Identity, Zabardast. So I am going to have 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and I have ai minus 1 in x-axis. So this is 0 0 1 0 0 0. All right. So this is the translation in x-axis. The next is rotation about z by an angle theta I. So let me just write that down here. So what would I have here? It will be cos theta I minus sine theta I sine theta I cos theta I 0 0 1 0 0, and then since there is no translation, so this is all 0 1 and 0 0 0. So this is my third transformation, which is actually the rotation about z by an angle theta I. And in the end, I will have a translation about z axis, and that can be again given by this matrix, which will have identity in the rotation matrix. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and now it is in the z axis, so di will come here in the z, and this is 0 0. जी, यहां तक ठीक है. इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इस तमाम चीज को हमने नेक्स्ट जो है वो आगे यूज करना है. So now if I now multiply all these four matrices, so I'm going to get this, which is shown on the left bottom corner of your slide. So I'm going to get this matrix, which is actually going to give me the transformation of I from which is transformation in from I to I minus 1. ये मैंने सारे इनको मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने यहाँ पे लिख दिए. So now this is the formula, or this is the matrix. Actually we have derived this as a link transformation. So ये जो मैंने एक रेड बॉक्स के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दिखाया है, this is actually a link transformation, जो हम किसी भी दो लिंक्स के दरमियान डीएच टेबल को यूज करते हुए एक लिंक ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे. जी, यहां पर कोई सवाल? अगर यहां पर कोई सवाल नहीं है तो हम अब इस वाला जो हमने लिंक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है, अब इसको हम आगे यूज करते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट मैं जरा इसको दोबारा ऑन बोर्ड ले लूं. सो all right, so we have
ये वाली हम कर चुके हैं। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम यही चीज यूज करने लगे हैं कि ये कैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेरिवेशन की है वो हमें कैसे नजर आएगी। अच्छा, सो ये इस वक्त जो आपको इस एग्जांपल नंबर 3.6 में जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, एक मैनिपुलेटर विच हैज वन रोटेशनल जॉइंट, one prismatic joint. So we have a rotational joint here, we have a prismatic joint here, and we have a rotational joint here. So हमने ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये जो डीएच टेबल है ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखना चाहूं तो इनफैक्ट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 0. This is the transformation from 2 to 1, and this is the transformation from 3 to 2. ठीक है। तो now if I want to know the transformation from 3 to 0, so I can find out by this 1 to 0, then transformation 2 to 1, and then transformation 3 to 2. So now if I want to write down transformation 1 to 0, so this is the line I am going to use, और मैंने क्या इसमें यूज करना होगा, ये जो यहां पे मुझे ये नजर आ रहा है इसको मैंने यूज करना है। लेट्स सी, यहां पे मेरे पास थीटा आई इज इक्वल टू थीटा 1, अल्फा आई माइनस 1 जो है वो मेरे पास 0 है, ए आई माइनस 1 0 है, डी आई 0 है, और थीटा आई जो है वो थीटा 1 है। तो गौर से देखिएगा, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर इन दिस। सो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करूं तो जो इक्वेशन जो मेरे पास मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, दैट विल बी cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 0, ए आई माइनस 1 फिर 0 है, सो दिस इज 0। यहाँ पे आ जाएं तो साइन थीटा 1 और cos अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1, alpha I minus 1 is 0, so cos 0 is 1, so I am going to left with here sin theta 1. Similarly, यहाँ भी cos alpha I minus 1 जो है वो 0 1 हो जाएगा, तो this will be cos theta 1. Then I have sin alpha I minus 1 which is 0, तो ये 0 हो जाएगा। देन साइन अल्फा आई माइनस 1 और d1 यहाँ पे 0 है, इसी तरह ये भी 0 है, तो ये भी मेरे पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इन सारों को फिलअप करूं तो ये दिस विल बी 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 एंड 1। सो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड आई हैव ऑब्टेन्ड दिस मैट्रिक्स using this row and plugging the values of all these parameters into this. जी, ये बात यहां तक समझ आती है? कोई यहां तक शक? ओके, अगर यहां तक आपको ये बात समझ आ रही है तो मैं अगले दो मैट्रिक्स जो हैं वो सीधे सीधे बिल्कुल यहाँ लिखने लगा हूँ, और मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको एक दफ़ा घर जाके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो T2 to 1 आई एम गोइंग टू यूज दिस रो, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 0 0 0 0 0 minus 1 minus D2, then 0 0 1 0, sorry, this is 0 1, sorry, this is 0 1 0 0 0 1 0 0, and the last is 0 0 0 1. So this is the transformation from 2 to 1,
and the transformation from 3 to 2 will be given by cos theta 3, cos theta 3 minus sin theta 3, minus sin theta 3, 0 and 0, then sin theta 3, cos theta 3, 0, 0, 0, then 0, 0, 1, L2, 0, 0, 0, 1. Okay. So I have written down these three matrices using the DH table parameters which we had already derived for this particular machine or for this particular manipulator, and using the link transformation which we have written down on the right top corner of this slide. So using these DH table and the link transformation derivation, I am able to write down these three matrices, and now when I multiply these three matrices together, so then I can find out T3 to 0. I can find out this by multiplying all these three matrices. Okay, Ji, if you are clear until here, so then we can move forward. Any question? Somebody to kindly respond that you have understood this. Yes, sir. Okay, so if you have understood this, so then I can move forward and I can now talk about um, this is actually I'm going to talk about here is actuator space, the joint space and the Cartesian space. So actuator space क्या चीज है? The actuator space is something which we see as a drawing in which we can assign frame to the actuators. Then we convert it into a joint space जिसके अंदर हम joint parameters की बात करते हैं. हम यहाँ पे joint parameters की बात करते हैं, and then हम इसकी Cartesian space में ले जाते हैं इसको, जिसमें कि हम फिर px, py और pz की बात करते हैं. So if I see these solid lines here, so these solid lines are actually the forward kinematics. Forward kinematics. That from the actuator space we go into the joint space, and from the joint space we go into the Cartesian space. So we have been studying this forward kinematics until now. And if we go vice versa, if we go with the dotted lines here, from Cartesian space to joint space and from joint space to the actuator space, so this is actually called inverse kinematics. Inverse kinematics. So inverse kinematics is something which we have not studied until now. We only know about inverse kinematics is that if we are given a position of a vector into space in terms of Cartesian space, so we can calculate the thetas, we can calculate the joint space in which we have the joint angles and the joint and the link lengths. So ये हम calculate कर सकते हैं. That is the inverse kinematics. सिर्फ हमें इतना इसके बारे में पता है. We have not derived any equation. We have not done any calculation. So this is something which we are going to do in the next week, the inverse kinematics. So what I would request you to, this article which I have explained it to you right now is about 1.5 page, rather a little less than 1.5 page of your book. So I would request you to please go back home and read this article. So this will give you an idea of these three spaces, then the forward kinematics and the inverse kinematics. And this is going to be a reinforcement of the knowledge which you have already studied. So let's move forward, and now we are going to talk about the kinematics. ये वो जो मैंने कहा था कि we are going to do the kinematics of two industrial robots.
So this is the first industrial robot, which is called Unimation Puma 560. So this is Puma 560, and Unimation is actually the uh, company, the first robotics company, which made Puma 560, and this was probably early 1960s. So the Puma 560 is a 6 degree of freedom robot with all revolute joints. So if I see here, so we have a joint here which can rotate. We have a joint here which can rotate like this. Then we have a joint here which can rotate like this. We have a joint here which can rotate like this. And then we have wrist. How many degrees of freedom wrist can have? My question is that how many degrees of freedom a wrist will have? No answer? Somebody to please respond. We have studied already. We have already studied this. What's the question? Sorry, sir. Sorry? Can you repeat the question? Ji, my question is that how many degrees of freedom the wrist joint will have? 3. 3. Very good. So a wrist joint is going to have 3 degrees of freedom. So let me now just see that how can we assign frames to this particular robot. So you can see here in this diagram, which is now revealed onto you. So we have the first, let me just take the red color. So we have the first frame, which is frame number 1. We have frame number 1 here. अच्छा, ये आपको यहाँ क्यों नजर आ रहा है कि मैंने ये जो बेस फ्रेम था यहाँ पे मेरे पास, इसको और फ्रेम नंबर 1 को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया. Not only that, I have put the frame number 1 and the frame number 0 here, but I have brought frame number 2 also onto this place. So now frame 0, frame 1 and frame 2, they are coincident. I repeat, जो यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी बनाने लगा हूं, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं, ठीक है? x0, y0, oh sorry, this is z0, this is actually z0, x0, z0 and y0. So I have actually picked up this 0 frame also and placed it here. So the 0 frame also goes here. So now I have 3 frames, 0, 1 and 2 at one place. और ये वही मैं यूज कर रहा हूँ अपनी कन्वेंशन कि जहाँ पे हमने कहा था कि जब फ्रेम्स आपस में एक दूसरे को, उनके जी जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो आई कैन टेक एनी कॉमन पॉइंट ऑन दैट इंटरसेक्शन एंड पुट माय फ्रेम्स देयर. सो ये यहाँ पे इसलिए आपने इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना. देन between this frame and the next frame, which is frame number 3, there is a link length called A2. ये आपको यहां नजर आ रही है. Then यहां पे जो मेरा फ्रेम 2 है, ये वाला फ्रेम 2 यहां पे जो है मेरा, there is an offset between frame 2 and frame 3, which is given by this offset D3. So ये अभी तक मैंने आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से सिर्फ 3 जॉइंट्स जो हैं ये उनको मैंने फ्रेम असाइनमेंट आपके सामने अभी की है. So let me reveal another diagram to you. Now see, अच्छा अब ये देखें, ये जो इस वक्त आपको
यहां पे ये जो डायग्राम नजर आ रही है, ये एक्चुअली इसका ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है जाता हुआ, इफ यू कैन सी इट ऑन विद द हेल्प ऑफ a laser pointer, let me just take the laser pointer. So ये वाला arm है, this is the arm which is shown you here in this orientation. So actually इस arm को ऐसे अगर मैं सीधा करूं, इस arm को मैं इस joint के अगेंस्ट रोटेट करके सीधा करूं, इसके साथ अलाइन कर लूं ऐसे, तो इसकी ओरिएंटेशन मुझे ये नजर आती है. Is this understood? जी, somebody to please respond. Is this understood? Okay. Yes, sir. So, जी, okay. So if this is understood, so I go back and then now this was my frame number 3, जो कि यहां मैंने ये नजर आ रहा था. This is my frame number 3. I have a frame number 4 here, जो कि मुझे यहां नजर आ रहा था. This was the frame number 4 और इसको अब frame number 4 मुझे यहां पे नजर आ रहा है. And since you know that we have 3 degrees of freedom, it means we have 3 motors in the wrist. So I have put frame number 5 and frame number 6. This is frame number 5. This is frame number 6. So I have put these 2 frames also coincident with frame number 4. And how can these be coincident with each other? Because let me show you the configuration of the wrist. So here you go. On the right top corner of your slide, you can see the configuration of your wrist. So this is your frame number 4. This is your frame number 4. This is frame number 5. This is frame number 6. और अगर मैं इनके Z बनाऊं, so this is Z4, this is Z5 and this is Z6. और इन तमाम को if since they are intersecting with each other, तो I can put them here, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मैंने I have put all my frames of the wrist at one place, which can be seen here. So ये मैंने wrist के तीनों frames को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया. So Puma की frame assignment and link assignment वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है. All right. अब इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि मैंने इस फ्रेम असाइनमेंट को देखते हुए मैंने इसका DH टेबल बनाना है. सो इस फ्रेम असाइनमेंट को देखते हुए मैं यहाँ पे ये DH टेबल इसका लिखने लगा हूँ. सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आपने इसको एक दफ़ा घर पे जाके ये जो मैंने लिंक असाइनमेंट बनाई थी इससे इसको रिलेट करना है. सो लेट्स सी. सो 0 और 1. सो आपको ये तो पता ही है कि ये जो पहली लाइन है, दिस इज बिटवीन 0 and 1. दिस इज बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन 0 and 1. सो 0 और 1 के दरमियान ये सारे कोइंसिडेंट हैं. देयर इज ओनली वन रोटेशन in between them. So this is 0, 0, 0 and theta 1. Okay. Then 1 से 2. So 1 से 2 इनमें देखें, इनमें क्या है? इसका z ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका z इधर जा रहा है. So अगर मैं z1 को z2 के ऊपर, या वो मैं वही कन्वेंशन पिछले वाली यूज कर रहा हूं. So मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैंने सिर्फ z को z पे मैप करना है. और अगर मैं z1 को z2 पे मैप करूं, अगर आप मेरे हाथ की तरफ देखें, मैं z1 को z2 पे मैप करूं इस तरह, तो जो x है दैट शुड, उसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो इट शुड गो इनटू द बोर्ड, इट शुड गो इनटू द स्लाइड. जबकि मेरा x1 जो है वो उसकी डायरेक्शन आपको ये नजर आ रही है. x की डायरेक्शन ये देखें इस तरफ नजर आ रही है. So this will have a minus 90 degrees here, then 0, 0 and इन दोनों के दरमियान जो रोटेशन है that is given by theta 2. All right.
अब आ जाए टी, ये क्या होगा 2 to 3, ठीक हो गया। ये मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग नोटेशन, और आप लोगों ने पॉइंट आउट भी नहीं किया। लगता है कि थोड़ा सा, सॉरी, this is actually 1 to 0, this is 1 to 0, this is 2 to 1, and this is 3 to 2, sorry। So आप लोगों ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, मैं भी, I just got carried away with this। So if I write down 3 to 2, so मेरे पास आ जाएगा 0 A2, then D3 and theta 3, and if now I write down 4 to 3, so this will be minus 90, minus 90, A3, D4 and theta 4. So T5 with respect to 4, this is plus 90 degrees। अभी मैं रिस्ट पे आ गया हूँ, ये रिस्ट है, this is wrist, 0 0 and theta 5, then minus 90 degrees, 0 0 and theta 6। सो ये मैंने DH टेबल अकॉर्डिंग टू जो मैंने इससे पहले कन्वेंशंस अपनी पढ़ी थी उनके मुताबिक मैंने ये, एंड दिस इज 6 to 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू 5। सो मैंने ये यहाँ पे DH टेबल बना लिया है। अच्छा, इसको आई वुड रिक्वेस्ट दैट व्हेन यू गो बैक होम प्लीज मेक दिस विद योर ओन हैंड्स, देखते हुए कौन सी कन्वेंशन, वो जो हमने कन्वेंशन देखी थी कि दो जॉइंट्स के दरमियान अल्फा आई माइनस वन क्या है, ए आई माइनस वन क्या है, डी आई क्या है, एंड थीटा आई क्या है। सो वो कन्वेंशंस फॉलो करते हुए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक दिस DH टेबल विद योर ओन। जी, एनी सर क्वेश्चन? अगर Z को ऊपर की तरफ ले लें, Z4 जो है, तो वो फिर भी चल जाएगा ना, क्योंकि वो जी सॉरी, 90 आ जाएगा। माइनस Z को नीचे की बजाय ऊपर की तरफ लेना है, वो जी कर मतलब सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए वो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी ना, कि जिसमें आपको ठीक है याद सर। होगा मैंने कहा था कि एक वो कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, इसके अंदर आप z की डायरेक्शंस को चेंज करके देखें तो आपके पास DH टेबल्स की वैल्यूज फर्क होनी शुरू हो जाती हैं। आई डोंट नो अगर आपने वो की हो तो, मैंने आपको कहा था कि जी घर पे करें, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था अगर आपने वो किया तो आप जब z की वैल्यू, z की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपके पास DH टेबल जो है वो डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। सो वो यूर एट लिबर्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप उसको अपना सॉल्व करेंगे तो आपको एंड में आंसर जो है वो सेम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड, एंड नाउ दिस इज द DH टेबल विच आई हैड रिटन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। सो इसको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, एंड वी नीड टू यूज दिस। ये वो कन्वेंशन है, आपको याद है, ये वो हमने जो डेरिवेशन की है। सो अब मैं एक एक लिंक को देखता जाऊंगा और एक एक लिंक की वैल्यूज जो मेरे पास DH टेबल की एक लाइन में मौजूद हैं, एक रो में मौजूद हैं, आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू दिस डेरिवेशन जो हमने लिंक की डेरिवेशन की थी, एंड वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, लेट्स सी, फ्रॉम 0 to 1 I can get it like this। So what I have done is that I have put the values of these parameters, I have put the values of these parameters of this row into this, and I have got this। ये अब आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। ये मैं इक्वेशन आपको एक मैंने बना के दिखा दी है, उसके साथ ये, तो अगर मैं, लेट्स सी इफ आई लुक एट दिस, दिस इज द सेकंड रो, अगेन वही पूरा फॉलो, सेकंड रो with my derivation and come back here।
Let me just try to make it for you so that ये आपको और clarity यहाँ पे आ जाए. So these three parameters, four parameters, 1, 2, 3, and 4, using this row, taking it here, and then coming back here. इसी तरह this is 3 to 2, this is 4 to 3, this is 5 to 4, and this is 6 to 5. Okay? अब मैंने क्या करना है? What I need to do is that I have to multiply all of them together to know what I need to find out, or what I am interested to find out is T6 to 0. I am interested to find out, let me just pick up this color. I am interested to find out T6 with respect to 0. और यहाँ मेरे पास ये सारे T matrices जो हैं ये आएंगे, और I can then multiply them together to find out T6 to 0. So सबसे पहले मैंने last two जो थे 5, 6, T6 to 5 and T4 to 5, I multiply those together. So I multiplied these two together and found out T6 with respect to 4. Then I multiplied these two together and found out T, which is now T6 with respect to 3. I can multiply these two together and find out T3 to 1. Then I can multiply these two together and find T6 to 1. अच्छा, अब ये यहाँ पे R की फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है कि ये इन वैल्यूज को जो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज बन जाती हैं. So ये आपकी बुक से ही मैंने लिया हुआ है. I have not done anything extra. So this is from your book. So let me see. So R11 की वैल्यू, R12 की वैल्यू क्या होगी? Let's look at this on the next slide. So ये R11 की वैल्यूज और ये सारी आपको यहाँ नजर आ रही है. ठीक है? We are doing the kinematics, the forward kinematics of Puma 560. ओके, सो अभी भी मैं 6 to 0 पे नहीं पहुंचा हूं. 6 to 0 के लिए क्या है कि आई हैव टू नो T6 to 1 जो कि यहां मौजूद है, और T0 से 1 के इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास ये R की फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है. एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि ये R की वैल्यूज क्या हैं, सो हियर यू गो. सो आई कैन फाइंड आउट नाउ. If I am given a transformation matrix of Puma 560 from 6 to 0, so मैं ये वाली values in terms of numbers अगर मुझे मौजूद हैं तो मैं ये तमाम angles जो है वो निकाल सकता हूँ. ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है. और if I am given the angles तो मैं ये transformation matrix जो है वो निकाल सकता हूँ. So this is just an example given to you of the Puma robot कि उसकी kinematics कैसे solve होती हैं. जी, if you have any question until here, if you have any questions, so I will answer. If no, so I am going to move forward and we are going to go to the second industrial robot. Okay. If you do not have any question, so I move forward, and now I am going to talk about Yasukawa Motoman L3. This is another robot which is known as Yasukawa Motoman L3. It's a 5-degree of freedom robot, and it has 5 revolute joints mechanism. So let me just put, in your book, in fact, in your book, ये जो Yasukawa Motoman है, this does not only have revolute joints, it has some actuators also. So we can solve it by 2 methods. One is with the actuator space and joint space, and then हम इसको ट्रांसफर कर दें into Cartesian space. यानी कि मैं
एक्चुएटर स्पेस से भी कार्टेशियन स्पेस में जा सकते हैं, बट सिंस हम उस डिटेल में इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए मैं वो एक्चुएटर स्पेस से जॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दैट conversion from the joints, from the actuator space to the Cartesian space, rather joint space से Cartesian space में exactly वही जो हमने अभी we have done it for Puma, so we are going to do the same for the Yasukawa motoman. So this is the assignment of the frame, assignment of the joints. टू इसके भी बेस को था, ये देखिए 0 1 एंड 2 को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड 5, तो इसकी रिस्ट में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि इसके पीछे जो एक्चुएटर है ये इसके लिए हेल्प करता है. सो लेट मी मूव फॉरवर्ड. सो मैं यहाँ पे मैंने दोबारा ये नहीं बनाया आपके सामने, सो ये बना हुआ है आपकी बुक में से, सो आई हैव पुट इट हियर एंड देन again taking each row of the parameters, like these parameters, taking this row, using this and coming back again. ठीक है, सो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने अभी प्यूमा के लिए किया था, we are going to do the same for this. This is given in your book. You need to practice it. If you want, please go ahead, practice it. Otherwise, मैं आपको भी 2 problems भी और solve करवाऊंगा, which are simpler in nature, which will give you more practice. So, ये चूंकि आपकी बुक में ये given है, तो इसलिए मैंने ये दोनों kinematics, प्यूमा की भी और यासुकावा मोटोमैन की भी, ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस की है. So let's see. If now I want to find out T520, which I am interested in, to find out the transformation matrix which gives me transformation of frame 5 with respect to base or 0 frame. So this can be given by this matrix, and इन तमाम की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में नजर आ रही हैं, और ये सारी मल्टीप्लिकेशन से हमने अचीव की है. किसकी मल्टीप्लिकेशन से? जो हमने अभी ये पिछली इसके ऊपर ये 5 मैट्रिसेस जो हमने देखे हैं, we have multiplied them together to come to this. Okay, so we are done with now Puma and we are done with now Yasukawa motoman. If you have any question, so please ask, and if you do not have any questions, so then I'm going to move to 2 more problems which are simpler in nature, and we can solve those 2 problems. Ji, should I move forward? आज के लिए काफी है. सॉरी, आज के लिए काफी है? नहीं, मैं बस जस्ट गिव मी 10 मिनट्स और मैं आपको ना 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं वो करवा देता हूँ, उससे ना आपको एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी. ठीक है, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर 10-20 मिनट्स. ओके, सो मैं मूव करता हूँ आगे, और मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नेम्स हैं. these are standard names of the frames which we come across. So these are called base frames. One is called base frame. Base frame अगर मैं दिखाऊं आपको, so ये आपको यहाँ नजर आ रहा है. This is the base frame. अगर कोई भी एक रोबोट है एंड हम उसके साथ कोई काम कर रहे हैं, सो अगर मैं इस राइट वाली डायग्राम को देखूं, सो दिस इज द बेस फ्रेम. So base frame is the location of base frame is now clear to you. Then the station frame, we can see the station frame here. Then is the wrist frame, so we can see the wrist frame here. अच्छा, इसके बीच में जो हमारे फ्रेम्स हैं उनकी बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी चीजें बेस और रिस्ट के दरमियान जो एक हमारे एक लिंक है, that comes to us with the help of a transformation matrix, रिस्ट और बेस के बीच में. तो इसलिए वो यहाँ पे इस वक्त आपको वो फ्रेम्स शो नहीं किए जा रहे. देन वी हैव अ टूल फ्रेम. अगर टूल को हमने, इफ वी हैव held a tool into a wrist, so then there will be a tool frame also. And then is the goal frame where we want our tool to reach. So in fact,
this is the relationship which I want to know, and I want to know what goal with respect to the tool frame. और अगर मैं इसको ऐसे पूरा पीछे ले जाऊं तो एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन यहाँ से बेस के साथ, सो मेरा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज एक्चुअली द गोल विद रिस्पेक्ट टू द बेस. सो ये मेरा एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने का होगा कि आई वांट टू नो द गोल वेयर आई वांट टू रीच विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, जो अभी हमने करके देखा जिसमें हम 6 to 0 कह रहे थे. तो ये गोल इज एक्चुअली 6 फॉर अस एंड बी इज एक्चुअली 0, जो कि अभी मैंने प्यूमा के केस में देखा. लेकिन प्यूमा में आपने देखा कि हमने टूल को अटैच नहीं किया था, तो अगर मैं उसके अंदर टूल अटैच करूंगा तो वो जो टूल है वो 7th फ्रेम चला जाएगा. ओके, ऑलराइट जी. सो दिस इज द स्टैंडर्ड नेम्स जो कि गिवन रहते हैं फ्रेम्स को. दीज आर द स्टैंडर्ड नेम्स. सो इफ यू कम अक्रॉस wrist frame or a tool frame or a goal frame, so you should be able to comprehend that what frame we are going to talk about or what frame we are talking about. Okay, so let us now move forward and see that how can we compute the kinematics of a planar arm. Ye planar arm, you have already seen this planar arm. This planar arm you have already seen. So you have two frames attached here, frame 0 and frame 1 on this. So we have frame 0 and frame 1 attached here. We have frame 2 attached here and we have frame 3 attached here. So आपको याद होगा कि हमने इसकी एक DH टेबल जो है वो बनाया था. So let me just write it down here इनके दरमियान. So ये this was 0 0 0 and this was theta 1, and then this was 0, this was L1 0 and theta 2, and this was 0 L2 0 and theta 3. So ये DH टेबल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि ये हमने कैसे बनाया. We will move forward and now we are going to talk about this. So again हमने वही चार पैरामीटर्स 1 2 3 and 4, इन चार पैरामीटर्स को हमने इसके साथ लेके जाना है और यहाँ से जब हम इसको इधर लेके आएंगे. So let me just write these down. So t 1 to 0 will be given by, अगेन ये देखिए थीटा 1. सो ये cos थीटा 1 है. सो ये c, अच्छा मैं इसको जरा थोड़ा शॉर्ट करके c1 लिखने लगा. c1, देन दिस इज माइनस sin 1. sin 1, ये this is actually theta 1. c1 means cos theta 1. Let me just write it down here. Cos 1 is equal to actually cos theta 1, and similarly sin s1 is equal to sin theta 1. ठीक है. देन 0 0, क्योंकि देखिए ai minus 1 भी 0 है और ये तो है ही 0 ये वाला. देन सेकंड में आ जाए तो दिस विल गिव यू sin 1 cos 1 0 0. थर्ड में 0 0 1 0 0 0 0 1. सो ये मेरे पास t0 बन गया. अब लेट्स सी दिस सेकंड वन. सो दिस इज एक्चुअली t2 to 1 2 to 1. सो लेट्स सी फर्स्ट को क्या देखें. दिस इज cos theta 2. सो दिस इज c2, क्योंकि ये cos थीटा आई है ना, cos थीटा आई है तो ये 2 to 1 है तो थीटा 2 आ गया. अगले में माइनस साइन थीटा 2, दिस इज माइनस s2 h2 0, और ai minus 1. ai minus 1 इसके अंदर क्या है, ai minus 1 is L1, so this is now L1. अगला साइन थीटा 1, sin theta I cos alpha 0 है तो this is sin theta 2, this is cos theta 2 0 and 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So this is the second.
लास्ट में आ जाएगी t3 to 1 इस वाले को। अगेन रेफरेंस यही है, इसके अंदर इसको हमने डालना है। सो दिस वुड बी cos theta 3, this is cos theta 3 minus sin theta 3 minus sin theta 3 0 and ai minus 1 इसके अंदर क्या है L2, this is ai minus 1, so this is L2, then sin theta 3 cos theta 3 0 and 0, then 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ठीक हो गया? So what I am interested in, I am interested in to find out t3 to 0, which can be given to me by 3 1 to 0, t2 to 1 and transformation 3 to 1. So we know that this will cancel out each other like this, like this. So we are left with t0 and then 3 here. So t3 to 0. अब इन तीनों को मिला के इनकी आपने इन तीनों को जो मल्टीप्लाई है वो आप अपने एंड पे खुद कर लेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं कर दूंगा। ठीक है जी? जी, इज दिस अंडरस्टूड? सिंपल है, यू ओनली नीड टू प्रैक्टिस दिस। So one thing in these type of problems you need to do is that number one, you need to find out the correct DH table, and the correct DH table can only be made if you have assigned the joint and link parameters correctly. So when you have the DH table with you, then it is just a matter of putting in the value into the link derivation or link transformation matrix which we have derived today. So the base is assignments, variable की assignments, link की assignments, then उनसे DH table को बनाना. This is the baseline. If you have made it correctly, then there will be no problem in finding out these transformation matrices. So second, ये भी आपने देखा हुआ है, so इसकी भी मैं आपको अगर असाइनमेंट कर दूं इसके ऊपर में, so let me just see, okay, let me take right. So यहाँ पे मेरा z 0 और 1 दोनों आ जाएंगे और x 0 और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है? So यहाँ पे मेरा z is going to come out of the board, so this will be my x2 and y2, x3 and y3, इसका भी z जो है वो बाहर आ जाएगा। So ये भी आपको याद होगा, we had made this also. So between these two there is only theta 1, so 0 0 0 theta 1, 1 and 2, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि z जो है वो दोनों अलाइन नहीं है, और जब मैं z को 1 को 2 पे मिलाऊंगा तो दिस इज 90 डिग्रीज। इन दोनों के दरमियान लिंक लेंथ इज L1, इन दोनों के दरमियान ऑफसेट इज 0 और इन दोनों के दरमियान एंगल इज थीटा 2, ये वाला। नाउ गो टू 3 and 2 के दरमियान दोनों के z जो है वो अलाइंड है, सो देयर इज नो लिंक ट्विस्ट। हाउएवर देयर इज a distance between two which is L2, there is no offset, but however there is an angle theta 3 between them. Okay, इसको मैं यहां तक करके छोड़ रहा हूं। आपने क्या करना है कि आपने t1 to 0 निकालना है, t2 to 1 निकालना है, t3 to 2 निकालना है, and finally you should come out with a transformation 3 to 0 which is given by t1 to 0, t2 to 1
and T3 to 2. And we know that this is correct because this will have same value, this will have same value. So we take 0 here and we take 3 here. So you can find out the transformation matrix 3 with respect to 0 with the base flow. Alright G. So if you have understood until here, so please go back home and practice these. We will have tomorrow a session of problem solving. We will solve more problems of forward kinematics. We will solve problems of parameter assignments, link assignments in terms of joint variables and link parameters, which is link twist, which is link length, which is offset, and which is the joint variable theta. So ये चार चीजें हम कल इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे. We will assign some links, we will make some DH tables, and then we will find out some more transformation matrices. So tomorrow's lecture will be a reinforcement of what we have studied today, and that will mark the completion of the forward kinematics of our course. G, I'm available if you have any question until here, or if you want to have any clarification. So I would answer your question. And if you do not have question, so please do let me know. Okay, so it means that you have understood everything what we have studied today, and you can go back home and see the recording of this lecture also and practice, so that when we come back tomorrow, and I would be requesting you all to please participate tomorrow and help me in solving problems, so that I would also be satisfied to know that you have understood the forward kinematics of robotics of our course. So thank you very much for your patient listening and be with me for this lecture. So let me just switch off the recording first.